Bismillahirrahmanirrahim. So when we talk about the agriculture, food production and preservation, the applications of biotechnology are the production of bread, cheese, yogurt and dough. This is the first application, that with the help of biotechnology we can produce various kind of eatables just as bread, cheese, yogurt and dough. This dough is used for many other bakery items just as pizza, just as burger, etc. The other application of biotechnology in agriculture, food production and preservation is the alcohol production. The food quality, taste and appearance of the food is improved through biotechnology. It is the third application that is about the betterment of the quality as well as taste. And by this application, what is the result we find? The result is we find more nutritious crops just as rice and legumes in the markets. The fourth application of biotechnology in the field of food industry is flavoring, the production of flavoring agents, sweeteners, supplements, food supplements just as calcium supplements, zinc supplements, magnesium supplements and fragrances just as different food fragrances like orange fragrance and the fragrances you find in different ice creams and the different flavors are also produced and available in market. It is the fourth application. The food items are also preserved through the biotechnological techniques such as pickle. It is the fifth application of biotechnology in the field of food production, that is the preservation of food through different techniques. When we talk about the health sector, the application of biotechnologies are production of medicines. It is the first one, just as insulin used for the treatment of diabetic patients, polio vaccines, penicillin, etc. The other one is production of antibiotics, the production of anti-allergies. These are the applications of biotechnology in the field of health sector. Next comes the environment. The major problem of environment is environmental pollution. The biotechnology has played its role to overcome or reduce the level of pollution in all the three states: solid, liquid and gas. So the first application of biotechnology in environment is bioremediation, and in this field biotechnology, with the help of biotechnology, we remove the pollutants from the environment. The bioagents such as some bacteria, some other microorganisms are used for the removal of pollutants, and these microorganisms may be bacteria, algae and some fungi. The other application of biotechnology in the field of environment is it removes the pollutants from the fuel. As you all know that the fossil fuels create large proportion of pollution in our environment in the form of carbon dioxide. Carbon dioxide is a greenhouse gas that adds in global warming. So by the use of biotechnology, the pollutants are removed from the fuels. The third application of biotechnology in the field of environment is the production of biodiesel. Biotechnology not only removes the pollutants from the fuel but also provides a clean fuel, that is biodiesel. It reduces the emission of harmful gases such in the form of carbon dioxide. Biodiesel reduces emission of harmful smoke in the environment. Here the carbon footprints means the compounds which contain carbon, such as carbon dioxide, such as methane, such as carbon particles. So when carbon footprints are reduced, our environment will ultimately be clean, because all these gases such as carbon dioxide, all these carbon particles add in greenhouse gases. So by the production as well as use of biofuel, biodiesel, these carbon footprints can be reduced. Moreover,
It also gives us bioplastics. It is the fourth application of biotechnology in the field of environment. Bioplastics are the plastic made from biopolymers. These are routinely used in packing of food as mobile phone covers, glasses, ballpoints, and in domestic products like shampoos and hair conditioners. They also reduce the aquatic and land pollutions. By the use of bioplastics, again the carbon footprints are reduced and our environment will be more clean. Next comes the textile industry. In the textile industry, the application of biotechnology is the production of carpets, apparels, and furniture. The main products are fabric dyes, tanning agents, vegetable tannins, and nylon and polyester. These are artificial type of polymer by which thread is produced, dresses are produced, and other materials are manufactured. And when we talk about the energy sector, as you all know, our country is suffering from energy crisis. So, to solve the problem, gas is produced from biorefineries, that is methane, and biofuel produced from algae are two most important applications of biotechnology. These two methods are able to produce sufficient energy and heat, and it might be possible that in future the natural gas may be replaced by biofuel. Hence, our environment will be more clean and livable. Other SLO was the biotechnology meeting the nutritional needs of growing population. You will find it on page 40 under heading number 3.9. अब न्यूट्रिशनल नीड से क्या मुराद है? न्यूट्रिशनल नीड से मुराद है कि हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को तमाम जो फूड या डाइट मिले उसमें तमाम के तमाम न्यूट्रिशंस हों, यानी वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन से मौजूद हों ताकि वो हमारी बॉडी में होने की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम आ सकें. द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज़ एवर ग्रोइंग वेरी फास्ट विच नीड्स सरप्लस फूड विद कंप्लीट न्यूट्रिशन. यही बात अभी हमने डिस्कस की है. द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर सच ग्रोइंग पॉपुलेशंस. सम ऑफ देयर एफर्ट्स आर एज फॉलोज. अब क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से अवेलेबल फूड कंटेंट में मोर न्यूट्रिशंस ऐड की जाएँ, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाए. अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो हमें दूध में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी मिलें. जैसे कि आपने मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स देखे होंगे कि दूध में आयरन ऐड किया जाता है, मुख्तलिफ वाइटामिन ऐड किए जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रोथ एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस मिल सकें. सो बायोटेक्नोलॉजी ने इस सिलसिले में भी एक बहुत अहम रोल अदा किया है. हम देखते हैं कि वो क्या है. एनिमल फूड प्रोडक्शन के सिलसिले में देर आर मैनी एनिमल्स दैट प्रोवाइड गुड क्वालिटी मीट वाइल मैनी अदर प्रोवाइड मिल्क ऑफ हाई फैट कंटेंट्स. Is it obvious that from some animals we get food, we get milk, meat, and some other animals we get milk. So अगर इन दोनों क्वालिटीज़ को कंबाइन कर दिया जाए, यानी हमें एक ही एनिमल से मिल्क भी मिले और एक वही एनिमल हमें हाई क्वालिटी मीट भी दे, तो ना सिर्फ इससे हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी बल्कि हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरी होंगी. सो द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स इन सिंगल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज टू एनहांस द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन डिजायर्ड till last century. Genetic engineering comes as a biotechnological solution to this problem. For better quality milk and meat, नीली रावी buffalo and Nancy sheep are produced respectively. यानी इन दोनों पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड नीली रावी बफलो और नैन्सी शीप डेवलप की है, जिससे हमें हाई क्वालिटी मिल्क और हाई क्वालिटी मीट मिलता है. दीज एनिमल्स आर इनफ टू मीट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब अगला प्रॉब्लम क्या आएगा कि इनकी ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन की जाए ताकि एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े. अब प्लांट फूड प्रोडक्शन में किस तरह बायोटेक्नोलॉजी ने इसको मोर न्यूट्रिशियस बनाया है देखते हैं. द प्लांट्स एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चरिंग. टिश्यू कल्चरिंग हम पढ़ चुके हैं कि एक आर्टिफिशियल मेथड है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और टिश्यू कल्चरिंग से ज़्यादा रैपिडली प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल मीन्स, दैट इज थ्रू सीड्स. This is also a biotechnological technique in which living cells are cultured and maintained in laboratories.
After successful production of desired plant varieties, the crops are shifted to the fields. जब plants इस काबिल हो जाते हैं कि वो सेल्फ ग्रोथ शो कर सकें तो उनको लेबॉर्ट्री से निकाल के फील्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. दिस टेक्निक हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द इशू ऑफ फूड शॉर्टेज. इससे क्या होगा कि हम कम जगह पे ज़्यादा प्लांट उगा सकेंगे. देयर आर सेवरल टिश्यू कल्चर बेस्ड गुड क्वालिटी राइस, लेग्यूम्स, wheat and other cereals available in the market. To sum up, we can say that without biotechnology, it would be difficult for humans to survive. The only possible solution to the food and health related issue is biotechnology. Biotechnology is the only solution to fulfill the needs of ever growing population in terms of quality as well as in terms of quantity. अब हम आते हैं genetic modifications animals में. The genetic modifications are not only limited to plant products. The field of animal husbandry is developed by GMOs as well. यानी animals में भी बहुत सी genetic modifications की गई हैं. Scientists have modified the fatty acid content in animals. The content of certain fatty acids, for example omega-3, is a very powerful energy-given fatty acid. Is also regulated in eggs. Various grains are often genetically modified with iron and vitamin contents. बहुत से ग्रेन्स में आयरन कंटेंट और विटामिन कंटेंट इंक्रीज किया गया है. जब हम फिश फार्मिंग की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी फिश की स्पीशीज प्रोड्यूस की गई हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है. इनमें बहुत से एंजाइम्स को इन्हेंस किया गया है, जैसे कि सैल्मोनिड्स और टिलापियस आर फैमिलीज ऑफ फिश दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड. There are some enzymes producing plant genes that are able enough to degrade the antibiotics. These enzymes indirectly reach in animal and make them resistant to antibiotics. क्या होता है कि ये फिश जब कुछ ऐसे प्लांट्स खाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उन प्लांट्स को फिश खा के अपनी बॉडी में भी ये फीचर इंड्यूस कर लेती हैं. यानी हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकते हैं. फिश जब ये प्लांट्स खाएंगी तो इनके अंदर भी ये क्वालिटी पैदा हो जाएगी कि वो एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकें, और फिर जब ह्यूमंस ये फिश खाएंगे तो उनके अंदर भी अल्टीमेटली ये क्वालिटी आ जाएगी, या उनके जेनेटिक मेकअप में भी ये चेंज आ जाएगा कि वो एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकें. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद इन ऑर्गेनिजम्स. थैंक यू वेरी मच.